गुड मॉर्निंग टू ऑल। आम प्रीवियस क्लास रे कोन करथले व्हाट इज डिफरेंस डिफरेंशिएबिलिटी रो डेफिनेशन एंड मीनिंग सिखितले। आज ताकि रिलेटेड रो गोटे थ्योरम ता अछि दैट करबा एवं तार रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करबी जे। सो फर्स्ट डेफिनेशंस को देखिबा। A f of x is a real value and a real function. If f of x is a real function and x is equal to a is a point in domain of f, then f is differentiable at x is equal to a if and only if limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a is exist and with a finite quantity. यह होचे हमरो generally definition. This is the definition for the differentiability. ले आज कोन करियो ले now there is a relation between continuity and differentiability. Continuity की differentiability के relation तो देखिबा कोन relation ता कहउछि ले there is a theorem, very most important theorem this was. If a function is differentiable at x is equal to a, then f is then function is continuous at x is equal to a, but converse need not be true. सर कौन आरो मीनिंग कहले जे कौनसी गोटे फंक्शन टे गोटे पॉइंट पाखरे डिफरेंशिएबिलिटी होची बोले ऑटोमेटिकली ता कंटिन्यूटी हो बोला अगेन हमें कंटिन्यूटी चेक करबो दरकार ले गोटे फंक्शन टे डिफरेंशिएबिलिटी होतले ता ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी हो बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू ले कन्वर्स ले कोन कंटिन्यूटी हेले डिफरेंशिएबिलिटी हो बोले कोई कि नहीं हे पारे न हे पारे बट गोटे फंक्शन टे डिफरेंशिएबिलिटी हितले देन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी हिजो डिफरेंशिएबिलिटी हिजिले कोले कंटिन्यूटी हिजियो देयर इज नो नीड टू चेक अगेन बट कंटिन्यूटी हितले डिफरेंशिएबल हबो कोइ कि किछि चांसेस नै मे और मे नॉट बी ले हेई पारे न हेई पारे दैट इज द थ्योरम एबे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोन प्रूफ करबा डिफरेंशिएबिलिटी हेले कंटिन्यूटी हबला नै ना चेक करबा जनरली कंटिन्यूटी रो डेफिनेशन हम कोन कहउछि जे कोनोसी गोटे फंक्शन गोटे पॉइंट पाखरे कंटिन्यूटी होची बेले सी पॉइंट पाखरे तार लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इक्वल हो सो जनरली कंटिन्यूटी डेफिनेशन कोन कोन कहउछि हमको एले संगे प्रूफ तो देखला बेले f is differentiable at x is equal to a if and only if limit x tends to a f of x minus f of a that is called f dash of a is equal to by x minus a differentiability हला डेफिनेशन ता ऊपर लिखा डेफिनेशन ता एग्जिस्ट हिची एबे हमें कंटिन्यूटी होची ले करो डिफरेंशिएबिलिटी नेली एबे हमें कंटिन्यूटी प्रूफ करियो पड़ो ये कंटिन्यूटी प्रूफ करबा पई मु फर्स्ट ऑफ ऑल केते बुद्धि हां कंटिन्यूटी प्रूफ करबा पई कोन करबे कंसीडर लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a would consider all value to be correct akumu limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a into x minus a એટલે multiply divided with x minus a संगे multiply करली again division करली तो डेरिवेटिव multiplication and divided multiply divided with x minus a कर એટલે कोन आसे हमको या गोटे फंक्शन टे या गोटे फंक्शन टे लिमिट कैन बी अप्लाइड टू द बोथ फंक्शंस तो केता आसे दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x minus f of a by x minus a into limit x tends to a x minus a limit x tends to a x minus a so the car value this value limit
x tends to a f of x minus f of a value a. That is equal to, actually this is the value of it, आपको चाहिए differentiability value f dash of a. Again x is equal to a substitution करो because indeterminate form a minus a. એટલે f dash of a into 0 is equal to 0. So it implies that limit x tends to a f of x minus f of a is equal to 0. So ఈ ఫంక్షన్ కి ఎప్పుడు నేను లెక్క రాసియో లిమిట్ x tends to a f of x minus limit x tends to a f of a is equal to 0. Take that side, limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a f of a. ఈ a रे a पकड़े again f of a का कुछ चेंज नहीं है फंक्शन में. रेड के तो जी लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू function value है, limiting value is equal to function value है ना. So automatically f of x is continuous at x is equal to a. है ना, f of x is continuous at x is equal to a. Again मैं कोशिश देखो कौन कर ली. First of all थ्योरम तक बुझियो को ट्राई करो. थ्योरम पे कौन करूची है? जे कौन से गुटे फंक्शन टे गुटे पॉइंट पाखरे डिफरेंशिएबिलिटी हितले ऑटोमेटिकली ता कंटिन्यूटी हेबो. तार प्रूफ टा नछ. फर्स्ट ऑफ ऑल मु गोटे फंक्शन के लेली x is equal to a पाखरे डिफरेंशिएबिलिटी होची ले कोई या थ्योरम का. देन f is differentiability at x is equal to a ने डिफरेंशिएबिलिटी रो डेफिनेशन अगर लिखी दैट इज दैट. नाउ ये फंक्शन टा को अप्लाई करो. लिमिट x tends to a f of x minus f of a that is equal to limit x tends to a f of x minus f of a by x minus a को मल्टीप्लाई कर ले एंड डिवाइडेड करो. अकॉर्डिंग टू द लिमिट फॉर्मूला आपको अप्लाई कर ले दुईटा लिमिट है. आ होची डेफिनेशन એટલે a पकड़े a minus a सॉरी a minus 0 नहीं a minus a ହେଲା. नाउ a minus a is equal to 0 अपडेट से होला 0 એટલે ई वैल्यू टा हमको 0 आइला. एबे कोन होची यार सेम लिमिट रो फंक्शन रो दुईटा डेफिनेशन a minus b f of x रो दुईटा ही लिमिट अप्लाई करी गोटे सेपरेट नहीं. इथे x रे पकड़े a पकड़े सेम का इट के लिमिटिंग वैल्यू या फंक्शन वैल्यू. लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू इक्वल है ऑटोमेटिकली इट इज ए कंटीन्यूअस है. So that is the main concept. એટલે કોણ હોची ଗୋଟେ ફંક્શન રે ડિફરન્શિએબિલિટી ହେଲେ ऑटोमेटिकली इट इज कंटिन्यूटी हे जियो. हेले एटी कोण होची कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. એટલે कंटिन्यूटी हेले डिफरेंशिएबिलिटी हबल कोइ की रूल किछि नाही. कंटिन्यूटी हेला कोइ की डिफरेंशिएबिलिटी हबल कोइ की रूल किछि नाही. तार हमें एग्जांपल वाइज प्रूफ करबा देखो. Now okay, एबे देखो बड़े एग्जांपल ले ली. f of x is equal to mod x at x is equal to 0. ये फंक्शन f of x is equal to mod x at x is equal to 0 को चेक करो. हां जनरली f of x is equal to mod x राइट अर्थ कोन हमको is equal to x if x is greater than or equal to 0 minus x if x is less than 0. या डेफिनेशन हला चेक फॉर द कंटिन्यूटी चेक करना. हां या ऑलरेडी हम करिछे बट अगेन हम करबो. कंटिन्यूटी करबो at x is equal to 0 f of 0 केता आसीबो पॉजिटिव 0. अगेन LHL की तरफ लिमिट x tends to 0 minus f of x. ले लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h. लिमिट h tends to 0 f of minus h. ले लिमिट h tends to 0 f of minus h ले less than 0 that is minus h. 0 पकड़े 0. नेक्स्ट RHL का सब लिमिट x tends to 0 plus f of x. ले लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h. लिमिट h tends to 0 f of h. ले लिमिट h tends to 0 plus h that is also 0. let LHL 0 आइला RHL 0 आइला फंक्शन वैल्यू 0 आसला. सो ये कौन होचा हमको LHL is equal to RHL is equal to f of 0. So f of x is continuous
at x is equal to 0 ले x is equal to 0 पाखरे ये फंक्शन टा कंटिन्यूटी अछि देखियो बोले बा ग्राफ टा केमिति होले दिस इज द ग्राफ ऑफ मान फंक्शन ग्राफ केमिति आछि या 0 पाखरे कंटिन्यूटी बट ये जागर तो देखो 0 पाखरे साफ पेट सो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी हो अकॉर्डिंग टू द yesterday concept खाली हम आगे प्रीवियस क्लास कांसेप्ट हम कोन बुझे जे कोनसी गुटे कानुटा शार्प एज थिले कि कार्नर पॉइंट थिले कि नॉन वर्टिकल थिलाले त डिफरेंशिएबिलिटी हो इटे देखो ये शार्प एज अछि सो 0 पाखरे शार्प एज अछि डिफरेंशिएबिलिटी होबनी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ एबे हम प्रॉब्लमेटिकली प्रूफ करियो एबे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करियो हां डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल एलएचडी देखो ये कांसेप्ट केमिति करियो एलएचडी का एलएचडी कौन को हमको what is the LHD limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a by minus h এটা বললে limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h limit h tends to 0 f of minus h minus f of 0 0 by minus h f of minus h less than 0 करता है तो फंक्शन का limit h tends to 0 modulus of minus h by minus h. So limit h tends to 0 modulus of minus h h by minus h is equal to minus 1. और LHD value कितना आसान को minus 1 आसान. Now RHD का दिख रहा है limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h. Limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h. Then limit h tends to 0 f of h minus 0 by h. So limit h tends to 0 f of h mod h by h. So limit h tends to 0 mod h h by h that is equal to 1. RHD के तरह LHD is equal to minus 1 RHD is equal to 1 आसला LHD is not equal to RHD डेटा का exist है but equal है so f of x is not differentiable at x is equal to 0 तालिको तक कांसेप्ट है अगर कोन कहले फर्स्ट टा को जे कोनसी गुटे फंक्शन टे गुटे पॉइंट पाखरे डिफरेंशिएबिलिटी होची बेले ऑटोमेटिकली ता कंटिन्यूटी हे जिवो बट कंटिन्यूटी हला कहले डिफरेंशिएबिलिटी होबनी हे पारे न हे पारे मे और मे नॉट बी एबे बेस्ट एग्जांपल दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फंक्शन तुमको लॉट ऑफ टाइम कॉन्फ्रेंस कांसेप्ट पर पता चलती गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन give an example of a function which is differentiable but not a continuous or continuous but not a differentiable yeah, continuous not differentiable mod x is the best example and another one example is there f of x is equal to x into sin of 1 by x f of x is equal to x into sin of 1 by x लिख लेंगे at x is equal to 0 ता continuity होस ना differentiability होगा कोड करले फर्स्ट हो सबडी इजी होची mod x at x is equal to 0 mod x at x is equal to 0 is a best example of a function which is continuity but not differentiability at x is equal to 0 like this is that a mod x is equal to 0 पाखरे हमको continuity होबो but differentiability होबनी हेले एबे जनरल हमें प्रॉब्लम देला से कोन कहबो फाइंड चेक द continuity and differentiability चेक करे को so first of all you are going to find the differentiability find करते हो differentiability ही लागला और देखें you no need to check for the continuity और चेक करे को दरकार है but differentiability no helle then you go for to checking the continuity hey pare chances ache so if any problem is given check on do check the continuity and differentiability of the function at that point is level so in that point first of all tame differentiability check karo if suppose it is a differentiability hilale no need to check for the continuity check karo according to the theorem because every differentiable function is continuous so no need to check it. But if the function is not differentiable at that point, then go for the checking of the continuity. Continuity check करने जीवो है So this is the next concept of this one. So first of all हम differentiability हिला again तारा related रो theorem टा करी ई theorem टा का हमें problem use कला को use हो सेति भाई पढ़वा देखो mod x से देखना सात पेट जो 0 पाखरे so it is not a differentiability at x is equal to 0 बोले तुमको जे कोनोसी कर्व साफ पेट जे थे vertical tangent ता slope टा पड़ा है लगी ता सब हमको differentiability have chances नहीं okay now
we are going to discuss in the problems related to your textbook related to problem करवा okay, see exercise 7J Jamie CHC textbook exercise 7J textbook नीचे फिर फर्स्ट 3 क्वेश्चन देखो f of x is equal to tan x at x is equal to pi by 2 f of x is equal to tan x at x is equal to pi by 2 या एक्चुअली एते डेड इजी क्वेश्चन जे समस्त के कोन करछन्ते f of x is equal to tan x देला तक्षण रे समस्त डिफरेंशिएबिलिटी पकेउ के जाउछ बुझिला ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल तमे या देखो जाग्रत से सुनो आमे कोन कहबा f of x is equal to tan x नीची ना फर्स्ट x is equal to pi by 2 पाकर तो एग्जिस्ट होछि ना ने के चेक करना समस्त LHD RHD पके की डेरिवेटिव करे को जाउछन्ते बट मु देखबे at x is equal to pi by 2 f of pi by 2 that is equal to tan pi by 2 is equal to infinity na so function value infinity रा continuity की चेक करियो differentiability की चेक करियो it is never possible ना अब कोन अछि if you want to check the continuity then limiting value and function value equal अछि and limiting value is must be function value must be infinite number of अछि एडी की अछि infinite अछि तम को point of discontinuity रे one of the cases is the first kind of discontinuity one of the cases first kind of discontinuity तो two cases कोइछि first case टा कोन कोछि function value is infinite हो second function के दुईटा को exist हो नॉट इक्वल हो तो first case बारी ना ये automatically function value का exist है ना function value is infinite so automatically f of x is discontinuous at x is equal to pi by 2 सर कंटिन्यूटी का ही नहीं डिफरेंशिएबिलिटी कोन पे चेक करियो सपोज कंटिन्यूटी इक्वल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता है तो डिफरेंशिएबिलिटी हला कंटिन्यूटी चेक करे दरकार नहीं बट कंटिन्यूटी ही नहीं देन हाउ कैन यू से दैट वाज f of x is not differentiable at x is equal to pi by 2 हिला आई तो को जे नो यूज ऑफ एनी फार्मूलास और एनीथिंग इन दिस एटा को सूत्र की कोन की किछि की मैं यूज करने उसलो लिमिट की कंटिन्यूटी डेफिनेशन की डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन कोन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पॉइंट पर किसी फंक्शन रे एग्जिस्ट हो द फंक्शन इज नॉट एग्जिस्ट एट x is equal to pi by 2 देन हाउ यू आर चेकिंग फॉर द कंटिन्यूटी कोन भाई तुमका tan x रे ग्राफ देखियो कोन तुम कोन होबे इटे -pi by 2 इटे +pi by 2 लिखला है सी ग्राफ की दस होला if you can draw that was tangent means the graph is like this is એટલે ಈ pi by 2 पाखरे infinity point रे पळो એટલે it breakable ही नहीं so breakable रे को कंटिन्यूटी केमिति को never be say that continuity ने हर को डिफरेंशिएबिलिटी के चेक करियो so ई pi by 2 -pi by 2 3pi by 2 5pi by 2 -3pi by 2 that 2n + 1 into pi by 2 comma n belongs to z पाखरे tangent is not exist सेति पे का tangent तमे डोमेन केमिति नम r minus 2n + 1 into pi by 2 domain नुथ होगा so since it is not a domain नते एक point देखि से continuity check कर then how can you go that first so this is the very most important concept that was no need to verify first of all ଗୋଟେ point दी छिले से point से function रे पकेगी function value exist होछि ना नै चेक करो function value exist हला then you go for the checking for continuity or differentiability if function value does not exist that is discontinuous first kind and first type of discontinuity this is so you no need to verification again हला रहेगा तर एक्चुअली नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज आल्सो सेम cot x at x is equal to pi by 2 cot x is equal to pi by 2 कोड हो चेक करो x is equal to pi by 2 को cot pi by 2 केता से देखो cos pi by 2 पे sin pi by 2 એટલે that is 0/1 0 সেটা এক্সিস্ট হচ্ছে দেন ইউ গো ফর দি চেকিং সেমিতি তুমি ফাংশনটাকে চেক করবে এবে আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা দেখো
f of x is equal to x square into mod x at x is equal to 0. f of x is equal to x square into mod x at x is equal to 0. आमे प्रीवियस रे कोन कोले mod x खाली गुटे कोले mod x फंक्शन गुटे कोले सो mod x फंक्शन आमे कोन कोले mod x is a single function, it is the continuity but not differentiability, but it is link होची x square into mod x आया कोन होचे हम चेक करेंगे तुमको तो फंक्शन चेक करला को फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन वैल्यू करा तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो सपोज डिफरेंशिएबिलिटी हे गला कंटिन्यूटी करे को दरकार ने डायरेक्ट लिखि देबो को सपोज डिफरेंशिएबिलिटी हलानी देन नो नीड टू चेक फॉर द कंटिन्यूटी गो फॉर द चेक फॉर कंटिन्यूटी दा चेक करबो એટલે તાગ્ર કોણ કોઈ દે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફંક્શન વैल्यू टा चेक कर f of x is equal to x square into mod x at x is equal to 0 f of 0 is equal to 0 square into mod 0 is 0 so function value exists at finite at 0 now go for the LHD LHD कोण को हमको limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a by minus h a अगर मन रे LHD ले लेफ्ट लगे इटा माइनस हो એટલે a minus h minus h इथे माइनस ऊपर माइनस हो तले माइनस आसे त मन r जे ऊपर प्लस आले तले प्लस आसे बहुत डोंट यूज योर ब्रेन मोर you simple LHD means I have anybody about the international problems which there is a 4 marks questions only you no need to thinking more about according to the minus h hochi so minus h is minus asle it minus asyo r is plus asyo so you can apply that limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h limit h tends to 0 f of minus h minus f of 0 कहते 0 by f of 0 0 हमें कर ले minus h limit h tends to 0 f of minus h substitution minus h whole square into modulus of minus h by minus h that is limit h tends to 0 h square into h cube है कहते मान of mod h is equal to positive हो it square तो positive h cube by minus h so that is equal to limit h tends to 0 minus h square 0 बगले 0 LHD is 0 asla now go for the RHD कहते हैं RHD कौन करियो LHD के minus करे minus RHD के plus करे plus limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by plus h limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h limit h tends to 0 f of h minus 0 by h substitution करो limit h tends to 0 h square into mod h by h it h square करला limit h tends to 0 h into mod h into h square इधर बगल में 0 LHD 0 आएगा RHD 0 आएगा so LHD is equal to RHD so it implies f of x is therefore f of x is differentiable at x is equal to 0 f of x is differentiable at x is equal to 0 in the previous theorem differentiability हला automatically कितना होगा continuity की जो अब check करोगे तो करना f of x is continuous at x is equal to 0 okay so previous problem को ले that mod x problem को ये problem different निकला ना mod x इलाटा हमको differentiability हला but x square into mod x इलाटा differentiability हला कौन पाए अगर जनरली लिख ले कितना वो x square into mod x is equal to x square into x if x is greater than or equal to 0 x square into minus x when x is less than 0 मतलब x cube minus x cube 0 वगैरह both are same so that is the meaning of this one this is the x cube and minus x cube curve so दुईटा को स्मूथ कर्व्स का x क्यूब कर्व टा एमिति जीवो minus x क्यूब कर्व टा एमिति आसे both are smooth curves negative वाला केमिति आसियो positive वाला केमिति जीवो so it nothing to worry about that class so it is a differentiability so but this is the difference of the two questions of previous question and this question previous questions रे mod x कोइथिले mod x इलारे x is equal to 0 पकरे differentiability हलानी but continuity हला but x square into mod x sir x square into mod x है x is equal to x into mod x को लिया बोले ठीक है आसियो x minus x आसियो x into mod x को ले ली then also it is continuity हो it is differentiability हो x square into को लेके x cube into को लेके x into को ले ली हो खाली mod x ले differentiability हो continuity का हो only single mod x is given then it is only continuity not differentiability but x power of n into mod x like it is automatically differentiability and both continuity हो
This is the second question. তারপরে next question number 7 টা দেখো বহুত question টা model of sin x তুমি করিব f of x x with that is also you can check it. Next 7th question, f of x is equal to x into sin of 1 by x. X not equal to 0 0 if x is equal to 0 at x is equal to 0. आप अगर चेक करें before का कोई this is the also one of the examination which is not differentiability but continuity. या differentiability होने से ना continuity होगा. आइए हम entrance और question तभी दोची तुमको question भी आगे ले दोची ले f of x is equal to x power of p into sin of 1 by x is differentiable at x is equal to 0 if p must be more than 1. P must be more than 1. A very most important concept for the entrance purpose. એટલે એટલે x square થીલે differentiability હોવો, x cube થીલે differentiability હોવો, x power 4 થીલે differentiability હોવો. એટલે n must be p must be 1 greater than 1. Positive number તો થવા છે. More than 1 and here p is belongs to n natural number system. More than 1 થીલે એટલે compulsory a differentiability હોવો. ಈ question টা both repeated times of I am seeing the various question papers in West Bengal and Karnataka, again in the JEE main also once time given, and your Orissa JEE main also is given that class. એટલે ઉપર ગુરતો કે Orissa JEE રે નંબર દીધા x square into sin of 1 by x differentiability होगा नहीं कहबो ಈ p ರ value more than 1 थिला रे it is automatically differentiability होगा 1 थिले कि 1 को कम थिले differentiability होगा नहीं 1 को कम थिला रे 1 और 0 का so देखो but it is a continuity. तुमको जे कौन सी वैल्यू को कंटिन्यूटी थियो खाली sin of 1 by x थिले कंटिन्यूटी होगा એટલે કે તો ચિંતા કરે કે આપણે x power of p into sin of 1 by x is continuous at x is equal to 0 if p is must be more than 0. More than 0 એટલે 0 તો अधिक ଅଛି 1 थिले 2 थिले 3 थिले सब थिले कंटिन्यूटी बट डिफरेंशिएबिलिटी ଅଛି more than 1 ଅଛି 1 to अधिक थिले डिफरेंशिएबिलिटी हो 0 to अधिक थिले कंटिन्यूटी हो. So अगर मैं जनरली चेक करिए आपका सॉल्यूशन है f of x studies अब अगेन ये क्वेश्चन लिखी हुई यू टेक द क्वेश्चन ये क्वेश्चन टा दीजिए at x is equal to 0 से फंक्शन वैल्यू दे दीजिए at x is equal to 0 फंक्शन वैल्यू f of 0 is equal to 0 because it is given again. हेले मु आपको कोन करबी I need to go to the find the LHD and RHD. First of all differentiability check करबी हला differentiability check करो चलो LHD limit x tends to 0 sorry limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a by minus h एबे कोइली कोन हो LHD लिखला ऊपर माइनस तले माइनस limit h tends to 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h then limit h tends to 0 f of minus h minus f of 0 0 by minus h h रे पकड़ के तासियो limit h tends to 0 minus h into sin of minus 1 by h by minus h इधर minus h को minus h को दिया इस साइड में minus है minus limit h tends to 0 sin of 1 by h तो का ऑलरेडी कोइली sin 1 by h रो वैल्यू h एनीथिंग थिला भी फाइनाइट वैल्यू आसियो बट नेगेटिव अछि प्ले नेगेटिव वैल्यूज आसियो ले या किता हो लाइज बिटवीन minus 1 to 0 मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू आसियो या कहूची it is a oscillatory system में तो कोई discontinuity है या कौन हो 0 करे sin of 1 by h रो वैल्यू 1 0 to 1 मजे थी भाई बट माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं minus 1 to 0 मजे कोई वैल्यू आसियो दिस इज द वैल्यू लाइज बिटवीन minus 1 to 0. Now come to the RHD का असले limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h
limit h tends to 0 f of h minus 0 by h limit h tends to 0 h into sin of 1 by h h ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ look at here limit h tends to 0 sin of 1 by h so this value is lies between minus 1 to 0 because positive values are coming that was this is the lies between minus 1 to 0 it minus 1 to 0 so negative sorry it minus 1 to 1 negative like positive aspect ಯಾವಾಗ lies between minus 1 to 1 lies between minus 1 to 1 so it allegedly lies between minus 1 to 1 allegedly lies between minus 1 to 1 but you cannot be say that which is the finite value એટલે minus 1 to 1 મજરે જે કોનો છે ଗୋଟେ value આવો but કો value આછો କିଛି કોઈ પરિવાની so it allegedly value confirm ର ଗୋଟେ value કોઈ परिવાની allegedly value ବି ଗୋଟେ confirm ର ଗୋଟେ value ଟା કોઈ परिવાની minus 1 to 1 ମଜରେ ଥିବା ଯେ કોનો છે ଗୋଟେ value ଟା ଆସିବ so you cannot be say that was both values are same both values are equal એટલે કોઈ પરિવાની maybe it minus 1 આલે એટલે plus 1 આઈ પરિયો it plus 1 आले तो minus 1 आस परियो नाले minus 1 को 1 मुझे जो जे कोन से वैल्यू आले ता से वैल्यू न आई परे so it is nothing to possible to say that was both are equal एल का में कोई परियो it LH का वैल्यू minus 1 to 1 मुझे रहेगा RH वैल्यू भी minus 1 to 1 मुझे रहेगा you cannot be say that which value is the coming correctly and exactly so therefore LHD is not equal to RHD so f of x is not differentiable at x is equal to 0 x is equal to 0 pakre differentiability habani this function is not differentiability at x is equal to 0 but this function is continuity at x is equal to 0 x is equal to 0 pakre ye continuity hobo but differentiability habani continuity hame ago class re bhi previous tum test book question re bhi achi question number 9 in your test book again question number 1 first main re 6th 4th question first main ro 4th question and first main ro 9th question duita ko dechi question so generally x into sin of 1 by x is continuity hobo sina differentiability hobani तुमको continuity ही की differentiability ना हो the best example of the questions are first one is mod x at x is equal to 0 and second one is x into sin of 1 by x again तुमको एक बार concept है x power of p into sin of 1 by x dala is continuous at when p is greater than 0 x power of p into sin 1 by x is differentiability when p is more than 1 p is more than 1 सर कौन पॉइंट है देखो सी कांसेप्ट में पूछ x स्क्वायर का दला देखिए कितना आसियो -h रो स्क्वायर by minus h suppose it x square derivative more the function का देखिए f of x is equal to x square into sin of 1 by x का देखिए more than 1 फिर कितना आसियो -h रो whole square into sin of -1 by h है એટલે h square आसियो by h रो h रो ऊपर रही जो ना ई पॉइंट बाहर लग गया ई पॉइंट है lh का limit h tends to 0 -h रो whole square into sin of -1 by h by minus h the limit h tends to 0 h square minus into sin of 1 by h by minus h minus h gets got let limit h tends to 0 h into sin of 1 by h है h into sin of 1 by h 0 into finite is equal to 0 ही जो सेम का r h भी हमको 0 ही जो l h भी 0 ही जो r h भी 0 ही जो l h 0 r h 0 जो ऑटोमेटिकली डिफरेंशिएबिलिटी हो सेति पई कहूची ई क्वेश्चन टा x ର पावर टा अछि नै दिस इज द पावर 1 मोर देन 1 थिला એટલે मोर देन 1 मींस 2 3 4 5 6 कोन थिले डिफरेंशिएबिलिटी हो मोर देन 0 थिला એટલે 1 2 3 4 कोन थिले भी कंटिन्यूटी थियो એટલે सपोज तुम ଗୋଟେ फंक्शन ते f of x is equal to खाली sin of 1 by x देला या कंटिन्यूटी नै डिफरेंशिएबिलिटी f of x is equal to x square into sin of 1 by x देला which is both continuity and differentiability f of x is equal to खाली x into sin of 1 by x है it is only continuity but not differentiability these are the three examples of questions more than 0 थिले continuity different हो more than 1 थिले continuity and differentiability हो या तो differentiability हो या continuity होची या continuity होची या continuity हो એટલે more than 0 थिले continuity more than 1 थिले differentiability remember very carefully that was x power of p into sin of 1 by x like p more than 0 थिले it is a continuity more than 1 थिले it is a differentiability this is the two best example of the questions for all competitive examinations रे बहुत यूज हो क्वेश्चन मु यार कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ही बट तुम्हें कंटिन्यूटी चेक करियो अछि मु करनी तुम्हें मतलब अगेन यू नीड टू डू द कंटिन्यूटी ना चेक करियो मु प्रीवियस क्लास में देखि अगेन यू हैव डोंट हैव द टाइम टू नो देखि बट यू गो टू चेक द कंटिन्यूटी चेक करला पर 7 जे एक्सरसाइज करियो गुटे 8 मेन क्वेश्चन टा छाड़ दियो 1 to 7 पते कर दियो मैं ऑलरेडी 3 2
सात नहीं 3 2 7 करदेली पहले तुम थिबा 4टा क्वेश्चन करिवो बट 8 क्वेश्चन छाड़ दियो मो नेक्स्ट क्लास रे कहबी तैतो हमें डिफरेंशिएबिलिटी करिवो पड़ो नेक्स्ट हम डिफरेंशिएशन को पढ़ो थैंक यू।